गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि 415 मिलियन पीपल इंडिया में जो है वो पॉवर्टी से बाहर निकले हैं सिर्फ 15 साल के अंदर। अब इस इंडेक्स में कुछ फाइंडिंग्स हम देखते हैं। लगभग 25 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया उन्होंने जो है अपनी ग्लोबल एमपीआई वैल्यूज़ को 15 साल के अंदर ही जो है बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया है, लगभग हाफ कर दिया है। और हर तरह के इंडिकेटर्स जो इंडिया में डेप्रिवेशन दिखाते थे उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट एब्सोल्यूट प्रोग्रेस इंडिया में देखने को मिली है। चिल्ड्रन जो है अंडर द एज ऑफ 18 उनमें जो है हाफ ऑफ द एमपीआई पुअर पीपल देखने को मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है क्या। 2010 में पहली बार लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के थ्रू जो है ये डेवलप किया जाता है। और 10 इंडिकेटर्स होते हैं इसमें, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऐसे इंडिकेटर्स के ऊपर ये डेप्रिवेशन का प्रोफाइल क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ई वे बिल। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जीएसटी काउंसिल ने भी रिसेंटली मीटिंग की है और उसमें जो है सैंक्शन दिया है कि ई वे बिल जो है वो मैंडेटरी होगा इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए गोल्ड ज्वेलरी और प्रेशियस स्टोन्स की। अब ई वे बिल है क्या। ई वे बिल का बेसिकली मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। ये एक परमिट होता है जो चाहिए होता है इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, अगर वो 50,000 से ऊपर के हैं। तो इसमें गुड्स कौन से जा रहे हैं उसकी उसकी डिटेल्स होती हैं, कंसाइनर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, ट्रांसपोर्टर कौन है, ये सारी जो है डिटेल्स दी होती हैं। एक यूनिक ई वे बिल नंबर भी जो है एलोकेट किया जाता है। जब भी कोई भी सप्लायर, रेसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर जो है ऐसी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इस ई वे बिल नंबर के थ्रू ही जो है वो पूरी जो है ट्रांजैक्शन होती है। अब ये ई वे बिल जो है वो जब गुड्स शिप होने होते हैं उससे पहले ही जनरेट करना पड़ता है। और जो है डिटेल्स उसमें सारी देनी पड़ती है कि कहाँ क्या गुड्स हैं, कौन भेज रहा है, किसके पास जाने वाले हैं और कौन ट्रांसपोर्टर है इसका। अगर कोई गुड्स पकड़े जाते हैं बिना ई वे बिल के तो 10,000 की पेनल्टी लग सकती है, या फिर जितना टैक्स इवेड करने की कोशिश की जा रही है उस उतनी की पेनल्टी लग सकती है, अगर जो भी ज़्यादा होगा। जीएसटी ई वे बिल जो है वो मैंडेटरी हो चुका है 1 अप्रैल 2018 से सारी इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और इवन विद इन अ स्टेट भी जो है फेज मैनर में उसको लॉन्च किया जा रहा है। ई वे बिल की जो वैलिडिटी है वो डिपेंड करती है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है। जनरली जो है अगर एक दिन में 100 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है गुड्स द्वारा तो ऑफ कोर्स ई वे बिल जो है वो ज़रूरत पड़ जाती, उसकी ज़रूरी होता है। कौन कौन से गुड्स जो है वो इसमें एक्सक्लूड किए गए हैं, मतलब जिनके लिए ई वे बिल नहीं जनरेट करना होता वो होते हैं पेरिशेबल आइटम्स, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। लेकिन अब गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर तो आ गया है ई वे बिल, ठीक है, तो अब ये वैलिड नहीं है। कुकिंग गैस सिलेंडर्स, रॉ सिल्क, वूल एंड हैंडलूम्स। कौन जनरेट करता है ई वे बिल? जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, जो भी रजिस्टर्ड जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है उसको जनरेट करना पड़ता है, अगर वो मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहा है 50,000 या उससे ज़्यादा की वैल्यू पे किसी रजिस्टर्ड पर्सन के साथ। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहा है, चाहे वो रेसिपिएंट भी हो, तो भी उसको जो है वो ई वे बिल जनरेट करना होता है। और अगर दोनों ही अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टर को जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो तीनों में से किसी को भी एक को जो है वो जनरेट करना पड़ता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो कलेक्शन जो हुई हैं अभी रिवैम्प्ड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में 176% जंप देखा गया है। 55,000 करोड़ रुपीज़ जो है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर में इकट्ठे हो गए हैं। तो ये जो स्कीम है ये सीनियर सिटीजन्स को एक रेगुलर इनकम देने के लिए जो है वो स्कीम लॉन्च की गई है 60 ईयर्स ओल्ड तक उनकी एज अगर हो गई हो तो, ठीक है। तो इंडियन सिटीजन्स जो 60 ईयर्स से अबव एज के हैं उनके लिए वो एलिजिबल हैं इसके लिए। रिटायरीज़ जो कि 55 से 60 साल के बीच में हैं या फिर उन्होंने वीआरएस ले लिया या सुपर एनुएशन ले लिया वो भी एलिजिबल होते हैं। रिटायर्ड डिफेंस पर्सोनल अगर वो 50 साल से ज़्यादा की एज के हैं, 60 ईयर्स से कम एज के हैं, वो भी इस स्कीम को ले सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड इसमें होता है 5 ईयर्स, लेकिन ऑफ कोर्स उसको 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। और जो नंबर ऑफ़ अकाउंट्स है उस पर लिमिट नहीं है, एक से ज़्यादा अकाउंट भी खोले जा सकते हैं और जॉइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है विद स्पाउस। डिपॉजिट की लेकिन लिमिट है, मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम 30 लाख।
और इसकी जो इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो क्वार्टरली पे किया जाता है। 1 साल के बाद प्री मैच्योर विड्रॉल भी जो है अलाउ किया जाता है। डिपॉजिट्स जो इसमें होते हैं वो अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स के अंदर वो क्वालिफाई किए जाते हैं डिडक्शन के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं समर्थ स्कीम। ये भी ये आपकी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक पैनल जो है समर्थ स्कीम का के इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स का उसको ब्रॉडन किया गया है। 43 न्यू इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स जो है वो शामिल कर लिए गए हैं। फंडिंग पैटर्न भी जो है वो रिवाइज किया गया है। लगभग 5% और कॉस्ट जो है वो कवर की जाएगी स्कीम के अंदर। तो ये स्कीम है क्या? ये स्कीम है एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है। प्लेसमेंट ओरिएंटेड अम्ब्रेला स्किलिंग प्रोग्राम है। इसमें इंसेंटिवाइज किया जाता है, सप्लीमेंट किया जाता है एफर्ट्स को इंडस्ट्री के जॉब्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो कौन सी इंडस्ट्री में जब जनरली किया जा रहा है ये? टेक्सटाइल और रिलेटेड सेक्टर्स में। एक स्पेशल प्रोविज़न भी है इसमें अपस्किलिंग या रीस्किलिंग के लिए, उसको भी ऑपरेशनलाइज किया गया है। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड जो है वो इसका मार्च 2024 तक रखा गया है। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है। और इस स्कीम के अंदर जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स या स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर काम कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं ये ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग। और रेपुटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, एनजीओ, सोसाइटीज, ट्रस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मनी म्यूल। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यंग पीपल जो 21 साल से कम की एज के हैं वो देखा गया है कि यूके में हर 5 में से एक जो है वो पर्सन निकल के आ रहा है सामने एज अ मनी म्यूल। मनी म्यूल क्या होता है? जो इलीगल पैसा ट्रांसफ़र करता है ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। तो जनरली क्रिमिनल्स क्या करते हैं? छोटे बच्चों को जो है वो एम्प्लॉय कर लेते हैं या फिर यंग लोगों को एम्प्लॉय कर लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि लेयर्स ऑफ डिस्टेंस जो है एक लेयर आ जाएगी क्राइम में। ठीक है, क्योंकि जनरली पुलिस जो है वो यंग लोगों को नहीं देखती है। ठीक है, छोटे बच्चों को या फिर यंग लोगों को नहीं देखती है, और उससे जो है पैसा जो है वो मूव किया जा सकता है। कई मनी म्यूल जो है उनको पता भी होता है कि वो क्रिमिनल एंटरप्राइज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम उनको नहीं पता होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं। तो मनी म्यूल जो है उनको कमीशन दिया जाता है उस काम के लिए, और ये एक बड़ा थ्रेट इमर्ज हो रहा है सामने यूके में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फॉस्फीन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली साइंटिस्ट जो है उन्होंने फॉस्फीन डिटेक्ट किया है वीनस के एटमॉस्फेयर में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए। फॉस्फीन क्या है? नेचुरली डेवलप्ड की जाती है बैक्टीरिया द्वारा जो कि वेरी लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रहते हैं। फॉस्फीन को प्रोड्यूस करने के लिए अर्थ का जो बैक्टीरिया है वो फॉस्फेट यूज़ करता है मिनरल्स में से या फिर बायोलॉजिकल मटेरियल में से, और उसमें हाइड्रोजन ऐड करता है। इसको हम हाइड्रोजन फॉस्फाइड भी कहते हैं इसलिए। इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो कलरलेस है, फ्लेमेबल है, बहुत ही टॉक्सिक गैस होती है, इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, जैसे गार्लिक जैसी स्मेल होती है। और इसकी जो इसका स्ट्रक्चर है वो लगभग अमोनिया की तरह होता है। ठीक है, लेकिन ये जो है पुअर सॉल्वेंट होती है अनलाइक अमोनिया, और ये मच लेस सॉल्युबल इन वाटर होती है। इसको सेमीकंडक्टर और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम वीनस के बारे में देखें तो वीनस क्लोजेस्ट प्लानिटरी नेबर है अर्थ का, स्लाइटली स्मॉलर देन अर्थ है, बहुत ही स्लो मूव करता है अपने एक्सिस पे। तो मतलब जो एक दिन है वीनस का वो अर्थ के 243 डेज़ के बराबर होता है। और एक यूनिक कैरेक्टर ये भी है वीनस का कि अनलाइक बाकी जो प्लैनेट्स हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो वीनस अकेला है जो क्लॉकवाइज अपनी एक्सिस पर घूमता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ ईडी डायरेक्टर डिक्लेयर्ड इलीगल। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो थर्ड एक्सटेंशन मिली थी संजय कुमार मिश्रा जो ईडी के डायरेक्टर हैं उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया है और कहा है कि वो 2021 की कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है। तो ऑफ कोर्स करंट जजमेंट जो है उन्होंने सितंबर 2021 की जजमेंट के ऊपर रिलाई किया और कहा कि अब फर्दर एक्सटेंशन जो है वो नहीं दी जा सकती थी ईडी के चीफ को। लेकिन उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट ने करवाई थी उसको जो है वो अपहोल्ड करते हुए कहा है कि ऑफ कोर्स ये लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट जो है उसको स्ट्रक डाउन नहीं किया जा सकता क्योंकि लेजिस्लेचर ने इसको पास किया है और ना ही इससे किसी का कोई फंडामेंटल राइट जो है ब्रिज हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम देखें इस बैकग्राउंड इस केस को तो हुआ क्या कि मिश्रा जो थे जो आपके संजय मिश्रा जो हैं इनको पहली बार ईडी डायरेक्टर नवंबर 2018 में बनाया गया और जैसे ही उनका टर्म ख़त्म होने वाला था 2020 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रेट्रोस्पेक्टिवली उस फर्स्ट अपॉइंटमेंट को जो है चेंज करके
2 साल का जो टाइम था उसको 3 साल कर दिया गया, मतलब 2021 तक, नवंबर 2021 तक जो है 2021 तक जो है वो एक्सटेंशन दे दिया गया। सितंबर 2020 उस एक्सटेंशन को जो है एक चैलेंज किया गया एक एनजीओ द्वारा, लेकिन सितंबर 2021 में जजमेंट आई और कहा कोर्ट ने कि कोई बात नहीं, जो है 2 महीने का टाइम रह गया है, इनकी जो है एक्सटेंशन को हम जो है वो चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए जो है ईडी के चीफ को। लेकिन दिसंबर 2021 में पार्लियामेंट ने 2 बिल्स पास किए जिसमें कहा गया कि जो डायरेक्टर्स ऑफ सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैं उनको जो है 3 साल के जो उनका टेन्योर है उस 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू जो उनका एग्जिस्टिंग टेन्योर 2 साल का होता है। तो मतलब अगर उसके हिसाब से हम देखें तो जो आपके जो ये ईडी के चीफ हैं उनको 1 साल की और एक्सटेंशन मिल गई, मतलब नवंबर 2022 तक उनको एक्सटेंशन मिल गई। लेकिन लास्ट नवंबर उनके जो ये टेन्योर है उसको बढ़ाकर फिर से नवंबर 2023 तक कर दिया गया। ये तीसरी बार एक्सटेंशन दिया गया ईडी के चीफ को। तो इसी जो है एक्सटेंशन को जो है वो कोर्ट में चैलेंज किया गया कई पटिशन्स द्वारा, और जो सीवीसी और डीएसपीई एक्ट जो पास किए थे पार्लियामेंट ने दिसंबर 2021 में उसको भी चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है 1997 में विनीत नारायण एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसमें कहा गया था कि फिक्स टेन्योर होना चाहिए सीबीआई चीफ का, वो डिफीट हो रहा है इस लॉ की वजह से। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स जजमेंट में ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 की जजमेंट का जो है हवाला देते हुए कहा है कि ईडी चीफ की जो अपॉइंटमेंट की एक्सटेंशन की जा रही है वो तो इलीगल है, क्योंकि हमने तो 2021 में कहा था आपको कि इस 2 महीने के बाद आपको एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। लेकिन जो लॉ पास किए हैं वो पार्लियामेंट ने सही किए हैं, मतलब पार्लियामेंट को के जो लॉज है उसको अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा है कि इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं दिखती है। अब हम देखते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है 1956 में एस्टैब्लिश किया गया था, उसको पहले एनफोर्समेंट यूनिट कहते थे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आता है, और 90 आता था एक्चुअली। 1957 में इसका नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। करंटली ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और ये फेमा, पीएमएलए इन सब केसेस को देखता है। अगर हम अपॉइंटमेंट देखें डायरेक्टर ऑफ ईडी की, तो ईडी के डायरेक्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। एक कमेटी होती है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की, और कुछ मेंबर्स होते हैं विजिलेंस कमिश्नर्स के, होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ डीओपीटी और रेवेन्यू सेक्रेटरी, उनके ही रिकमेंडेशंस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ये अपॉइंट करती है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is global multidimensional poverty index. This topic is important for your social issues. Recently, global multidimensional poverty index has reported that a total of 415 million people have moved out of poverty within just 15 years. Okay, so 25 countries, including India, have successfully halved their global MPI values within 15 years. And the report has also noted that deprivation in all indicators has declined in India. So India has shown fastest absolute progress, and children under the age of 18 account for just and they account for half of MPI poor people in the country. Okay, in the world actually. So what is global multidimensional poverty index? It was developed by United Nations Development Program and the Oxford Poverty and Human Development Initiative. It was first launched in 2010, and it uses the criteria or indicators of 10 such indicators like health, education, and standard of living, and based upon that this index is prepared. So the next topic is e-way bill. So this topic is important for our governance section. The GST Council meeting has recently given sanction to issue the order making e-way bill mandatory for intrastate transportation of gold jewelry, and precious stones. So what is an e-way bill? It is basically electronic way bill, and it is a permit which is needed for interstate and intrastate transactions or transportation of goods which are worth more than 50,000 rupees. So it contains details of the goods, the consignor, the recipient, and the transporter. So it means that what goods are being transported, who is transferring them or who is selling them, and who is receiving them and who is transporting them. Okay, so it creates a unique e-way bill number
and this must create details like the what are the goods, who is the consigner, who is the recipient, and who is the transporter. If a consignment is found without an e-way bill, then a penalty of 10,000 rupees or tax which is sought to be evaded, of course whichever is greater, can be levied. GST e-way bill has been made mandatory from 1st of April for all interstate transport of goods above 50,000 rupees, and in a phased manner it is also being made compulsory for goods movement within a state. So e-way bills validity varies depending on the distance that the goods have to travel. Generally, the perishable items are exempted from it, and the silver jewelry, cooking gas cylinders, raw silk, wool, and handlooms are also excluded from it. But now the gold jewelry has been covered under the ambit of the e-way bill. So who should generate an e-way bill? Anyone who is a registered person. So let's suppose that A and B are making a sale. A is selling certain goods worth 50,000 or 50,000 or more to B. Then if A is a registered seller or registered on GST, then of course he has to generate that e-way bill. And if B is is also registered on GST, but A is not registered, then the liability would fall on B. And if both are not registered on GST, then of course the transporter would have to face the this e-way bill liability. And if both of them, of course, are A and B, both are not registered on GST, of course, then transporter would have to generate that e-way bill. So the next topic is Senior Citizen Savings Scheme. This topic is important for your economy section. So collections under the revamped Senior Citizen Savings Schemes has jumped 176%, and it has reached 55,000 crores in the first quarter of the current financial year. So this scheme was launched with the main aim of providing senior citizens in India regular income. Indian citizens above the age of 60 years are eligible for it. Retirees in the age bracket of 55 to 60 years who have opted for voluntary retirement scheme or superannuation are also eligible for it. Retired defense personnel who are above 50 years and below 60 years of age are also eligible for it. The maturity period is 5 years, and a depositor can extend one's maturity period for another 3 years. So how many accounts can be operated? Of course, there is no maximum number of accounts which can be operated. It can even the person or the beneficiary can also open a joint account with the spouse, but there are limits on deposits. Minimum deposit is 1,000 rupees, maximum deposit limit is 30 lakh rupees, and the interest payment is under this this scheme is paid at the quarterly level, and premature withdrawal is allowed after 1 year, and also the deposits are qualified for 80C deduction in the Income Tax Act. So the next topic is Samarth scheme. This topic is important for your economy section and your social issues also. So a panel of Samarth scheme implementing partners has recently been broadened, and 43 new implementing partners have been empaneled. So the funding pattern has been revised and with an increment of 5% in cost norms. So Samarth scheme is a demand-driven and placement-oriented umbrella skilling program which incentivizes and supplements the efforts of industry in creating jobs. And this is an entry-level skilling program in which special provision for upskilling or reskilling is also operationalized. So implementation period of this scheme is up to March 2024, and it falls under the Ministry of Textiles. So anyone who is belonging to the textile industry or in institutions, organizations of the Ministry of Textiles or state governments, or even reputed training institutions, NGOs, societies, trusts, they can become partners in this scheme. So the next topic is money mule. This topic is important for your security and economy section. Young people who are under the age of 21 account for around 1 in 5 cases of UK in the UK where money muling activity is suspected. So money muling basically means that someone who is transferring or moving illegally acquired money on behalf of someone else. Basically, it is used in money laundering cases where criminals recruit these money mules to help launder proceeds derived from illegal activities. So money mules basically add layers to the layers of distance between crime victims and criminals, and this helps the funds to move in various ways, because generally the police does not get suspected of these children
or these young children. So some money mules, some of these children, they know that they are being supported by criminal enterprises, but many of them are unaware that they are helping criminals to operate. So they often receive a commission for their service. Okay. So the next topic is phosphine. This topic is important for your science and tech section. So recently scientists have detected phosphine at deeper level of Venus atmosphere using the James Clerk Maxwell telescope at Hawaii. So phosphine is developed naturally by bacteria which lives in very low oxygen environment. Generally, earth bacteria takes up phosphate from minerals and then or through biological material, and then they add hydrogen to it. That's why it is also called hydrogen phosphide. It is a colorless, flammable, extremely toxic gas which with a garlic-like odor, and it is structurally similar to ammonia, but it is not. It is a very poor solvent, and it is much less soluble in water. It is also used in semiconductor and plastic industry. Okay, so let us also see about Venus. Venus is the closest planetary neighbor of Earth, and it is slightly smaller than Earth. It rotates very slowly on its axis, and one day on Venus lasts about 243 Earth days. So Venus is the only planet on in our solar system which spins clockwise. Otherwise, all planets spin anti-clockwise in anti-clockwise direction. So the next topic is extension of ED director declared illegal. This topic is again important for your governance section. Recently, Supreme Court has said that the third extension which was given to Sanjay Kumar Mishra's tenure, who is the ED director, is illegal, and it is in violation of judgment of 2021 of Supreme Court. So judgment has cut short ED chief's stint now, and the court has relied on the judgment of the Supreme Court only of 2021, September 2021, which had said that we are upholding the extension of ED chief, but no further extension shall be granted to Mishra. Okay, and but the court has upheld the constitutional amendments made to the Central Vigilance Commission Act, Delhi Special Police Establishment Act, and the Fundamental Rules in 2021. So, what is the background of this issue? So he was appointed as Mishra was appointed as the ED director in November 2018 for a period of 2 years. But then when the 2 years passed, then in November 2020, the president passed an order retrospectively that gave Mishra's tenure to 3 years. That changed the tenure of Mishra to 3 years. But in 2020, this 1 year extension was challenged by an NGO in the Supreme Court. Then in September 2021, the Supreme Court said that okay, this because the tenure is about to end in 2 months, we are upholding this extension. But the court also said that no further extension should be given to him anymore. But in December 2021, the Parliament passed two bills to replace the ordinances which were promulgated in November 2021 to enable extension of the tenures of CBI and ED chief from the normal 2 year tenure to even extension of it to 3 years. So this extension was allowed to be granted in public interest. Okay, but uh, so that's why he got an extension from November 2021 to November 2022 period. But last November, his tenure was further extended by a notification till November 2023. So this was the third extension given to him. This extension was then challenged by a bundle of petitions, and these petitions also challenged the Parliament passed bills or acts of December 2021. And it also said, these petitions said that the Supreme Court judgment in 1997 in Vineet Narayan and others versus Union of India case, where the Supreme Court said that that the CBI chief should have a fixed tenure of minimum 2 years. But so the judgment has now come for this case. So the Supreme Court has said that it's okay, these laws that have been passed by Parliament, there's nothing wrong with that, but this extension of the ED chief's tenure cannot be considered as legal. Okay, so anyways, what is
Enforcement Directorate. It was established in 1956 as an enforcement unit under the Department of Economic Affairs. In 1957, it was renamed as Enforcement Directorate, and it is currently placed under the administrative control of Department of Revenue, which is under the Ministry of Finance. ED is responsible for enforcement of many laws like FEMA and PMLA, and the ED director is appointed by the central government based upon the recommendation of a committee, which is chaired by the Central Vigilance Commissioner, and its members comprise of Vigilance Commissioners, Home Secretary, DOPT Secretary, and even the Revenue Secretary. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.